Opposition uproar disrupts another day of Parliament. Both Rajya Sabha and Lok Sabha adjourned without undertaking any legislative business. Rajya Sabha chairman rejects all 18 adjournment motions on various issues. Opposition protests the chair's move to decline the suspension of the day's business. And in response to Arun Govill's question on the issue, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav says stronger laws needed to check vulgar content on social media. The news in detail. In the lower house, the proceedings on Wednesday started with the question hour. The first question on the day was on laws to check vulgar content on social media. Arun Govil, BJP member from Meerut, Uttar Pradesh, inquired on the existing mechanism to check telecasts of vulgar and sex-related content through social media platforms illegally. The answer to the question was provided by Minister of Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnav. Shri Arun Govil. Question number 1. मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य, सोशल मीडिया पर जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, इसमें हमारे नैतिक मूल्य और संस्कारों पर बहुत गहरी चोट पहुँचाई है। OTT प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों पर ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज ख़त्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। In a supplementary question, Arun Govil inquired if there is a policy the government plans to bring to check content being aired in India by foreign platforms. He even expressed his concern on the ill effects of vulgar contents on the Indian society. In his reply, the INB minister said that the members' concerns were genuine and laws needed to be strengthened to counter the menace. इस तरह के आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। शॉर्ट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं,
वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब हर देश में, इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। Soon as Arun Govil began to ask his question, the opposition members started sloganeering. Before he could ask his supplementary, the speaker appealed to the members to maintain decorum in the House and allow the first-time member to ask his question. पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य है, प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। पहली बार माननीय सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। The opposition members continued sloganeering and the proceedings got affected. As the impediment continued even after the speaker's continuous appeal for decorum, he was forced to adjourn the House till 12 noon. माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय, सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। After the House reassembled at 12 noon, Dilip Saikia was in the chair. He first informed that the Speaker had rejected all the adjournment motions requested, after which important papers were laid on the table of the Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। प्लीज सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राव इंद्रजीत सिंह जी। On behalf of the Minister of Culture, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 2 of today's revised list of business. Thank you. Item number 3, Dr. Jitendra Singh जी, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। आइटम नंबर 4। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on behalf of my colleague Shri Jain Chaudhary, mentioned against his name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5 श्री श्रीपद जयसु नायक जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 5 of today's revised list of business. आइटम नंबर 6 श्री पंकज चौधरी जी। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, mentioned against his name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7 श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्रीमती रक्षा खड़कर जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of the
आइटम नंबर 9 श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. आइटम नंबर 10 श्री हर्ष माल्होत्रा जी। Honorable Chairperson sir, I beg to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 10 in today's list of business. आइटम नंबर 11 श्रीमती नीमूबेन बर्माजी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 12 श्री जॉर्ज कुरियन जी। Honorable Speaker sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name, serial number 12, in the revised list of the business for today. The Lok Sabha on Wednesday also passed 3 motions brought related to the formation of SC/ST committee, OBC committee and a motion for election of 2 members to the Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum. लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331 ख के उप नियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उप नियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से श्री कृष्णलाल कनवार, जिन्होंने 14 अक्टूबर 2024 से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति के शेष अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि श्री अनंत नायक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 श्री गणेश सिंह जी। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूँ। यह सभा राज्यसभा से यह सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री बीड़ा मस्तान राव यादव, जिन्होंने दिनांक 29/8/2024 को राज्यसभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के साथ संयोजित करने हेतु राज्यसभा के सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित करने पर सहमत हो और समिति में इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि श्री गणेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker sir, with your kind permission, I rise to move that in pursuance of the subsection bracket 1 of section 5 read with section 1 and bracket 2 of section 6 of the Sri Chitra Tribunal Institute of Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act 1980, the members of this house do proceed to elect in such manner as the speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as members of the Institute of the State Chitra Institute for Medical Science and Technology, Trivandrum, subject to the provisions of the Act and the rules and regulations laid down thereafter. प्रश्न यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। The chair again appealed for opposition's cooperation in orderly functioning of the House to no avail. As disorder prevailed, scheduled legislative business could not be undertaken and the House was adjourned till 11 a.m. on Thursday. सबका देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। प्लीज आप अपने सीट पर बैठिए, अपने सीट पर बैठिए प्लीज अपने सीट पर बैठिए प्लीज।
सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 28 नवंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। At the commencement of the proceedings of the Rajya Sabha on Wednesday, Chairman Jagdeep Dhankar extended birthday wishes to Bikash Ranjan Bhattacharya, Dr. Vanviroy Kharlukhi and Dharmshila Gupta, whose birthdays fell on Wednesday. The chairman praised Bikash Ranjan Bhattacharya for his prolific contributions to the field of law and theatre. Bikash Ranjan Bhattacharya is currently a member of the Rajya Sabha representing the CPIM. Dr. Vanviroy Kharlukhi, a member of the National People's Party, was also acknowledged. He has had a distinguished career as an educationist, social worker and teacher. He hails from the state of Meghalaya. Dharmshila Gupta, serving as a Rajya Sabha member from the state of Bihar, was recognized for her contributions as the president of the BJP Mahila Morcha. She is also a teacher and a strong advocate for women's empowerment. Shri Bikash Ranjan Bhattacharya is a member of this House since April 2020, representing the state of West Bengal. He is currently the floor leader of his party, Communist Party of India, Marxist. Shri Bhattacharya, a designated senior advocate, had earlier served with great distinction as Advocate General of Tripura from 1998 to 2003. He also served as the Mayor of Kolkata from 2005 to 2010. Shri Bhattacharya's contributions in the field of theatre is equally praiseworthy. He has acted in several acclaimed plays, both in India and abroad. His remarkable performance in the play Nati Binodini that was performed at Rashtrapati Bhavan before the then President Shri K.R. Narayanan. This is remembered till this day by his friends and admirers. I have the honor to be one. Dr. Vanviroy Kharlukhi, a distinguished member of this August House since June 2020, has had a remarkable career as a teacher, educationist, and social worker. Dr. Kharlukhi had served in the state of Meghalaya in various capacities, including a chairman of Forest Development Corporation, Tourism Development Corporation, and deputy chairman of the State Planning Board. His leadership was pivotal in the formation of the Meghalaya Students' Union and National People's Party, of which he served as the state president. Shrimati Dharmshila Gupta, a member of this House since April 2024, representing the state of Bihar, is a doctorate in botany and has been teaching in Mahila Vidyalaya in Darbhanga. A grassroots leader and ardent advocate of women empowerment, Dr. Gupta had been a two-time municipal councillor in Darbhanga and had served as an independent director on the board of Eastern Coalfields. She currently serves as the state president of BJP Mahila Morcha in Bihar. Important papers were laid on the table of the Rajya Sabha on Wednesday. Papers related to the Ministry of Home Affairs were presented by Dr. Nityanand Rai, while papers concerning the Ministry of Education were tabled by Sukanta Majumdar. Papers to be laid on the table, Shri Nityanand Rai. आदरणीय महोदय, मैं आज की कार्यावली में क्रम संख्या 2-1 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। श्री सुकांता मजुमदार। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House
the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. Chairman Jagdeep Dhankar informed the House that suspension notices submitted under Rule 267 by opposition MPs had been rejected. He highlighted the significance of the parliamentary session marking the 75th anniversary of the Constitution and called on members to enhance productivity through meaningful discussions, deliberations and debates. The chairman stressed on the importance of adhering to parliamentary rules and assured members that there would be ample opportunities to address their concerns within the framework of these rules. I took the House in confidence in making the House aware that if we look at the journey of this House with reference to Rule 267, even for the last 30 years, where we have had various political dispensations in authority, in governance, the number was never beyond single digit. And the background every time reflected a consensual approach, a dialogue between the parties, keeping everything in mind, while not being able to lend my concurrence to these notices. I would appeal to the members of this House, this being a historic day, the very first day of the fourth quarter of the century of adoption of the Indian Constitution. Let us raise the productivity bar. Let us generate an atmosphere that we exemplify by discussion, dialogue, deliberation, and adherence to rules. All these issues, honorable members, there will be occasion to raise in accordance with rules. Since there is a provision in the rules to raise these issues in one form or the other by motions that are provided, these notices are being declined. The upper house reassembled at 11:30 a.m. after its first adjournment on the day. The chairman requested that decorum be maintained. However, as the situation was not conducive to further deliberations, the house was adjourned until 11 a.m. on Thursday, 28th of November. There can be no point of order when the house is in disorder. The house is in disorder. The house stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 28th November 2024. That is all we have in this episode of House Highlights. We will keep you abreast with further developments during the winter session of Parliament. Keep watching Sansad TV. Good night.